Yes. So over here, we are starting with the new topic, that is dispersal by wind. All right. We have already done in the previous class with dispersal by explosion. I hope that you people all remember it. So this is the new topic as dispersal by wind. यानी कि और भी flowers किस तरह से disperse होते हैं? How do the seed disperse from the flower? This is the second agent of it. I mean that this is the second method for it. This is the second type of it. And for that, you need to open page number 98 from your books. All right. Now, as you can see on this image, that there are petals of the flowers which are going and which are traveling in the wind. The petals of this dandelion flower are flying in the wind. It is like parachute. I hope you all have seen a parachute. Parachute is a air balloon जिसके अंदर लोग travel करते हैं, है ना? It's a very huge balloon. So this flower is known as a dandelion flower. All right. The flower that you can see on the image is known as the dandelion flower. And as you can see, it has so many beautiful white petals. And all the petals of these flowers are traveling in the wind. Wind मतलब हवा. ये सारी की सारी इसकी पत्तियां हवा में उड़ रही हैं. All right. So as you can see that this image has already given us a very clear view of a wind dispersal. Again on this picture, this is the animated version of it. यानी कि ये कार्टूनिक वर्जन में बना हुआ है. Again, I want all of you to memorize the name of this flower. इस flower को हम क्या कहते हैं? A dandelion flower. All right. We call this flower as a dandelion flower. And again, you can see that all the petals of these flowers are traveling and flying in the winds. आप देख रहे हो ये सारी हवा में उड़ रही हैं. So over here, the topic that we are starting is dispersal by wind. यानी कि dispersing or moving another through wind. All right. Moving or going from one place to another through wind. अब ये flowers wind में किस तरह से जाते हैं? As you all know that we have already done the wind by dispersal by explosion. उसके अंदर क्या होता था कि seeds खुद ब खुद explode होती थी. All right. बट अब जब हम wind dispersal की बात करेंगे तो हम इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि हवा से जो petals यहाँ से वहां जाती है. I know that as you people have traveled out a lot many times, आपने देखा होगा कि अक्सर plastic bags, all right, most of the time you must have seen that plastic bags also rotates or flies in the air. हमने देखा नहीं जो शॉपर्स या जो कचरा हवा में पड़ा हुआ होता है जमीन पर, जब बहुत तेज हवा चलती है तब वो कचरा भी घूमना शुरू हो जाता है गोल गोल. Have you ever seen it? And even your hair, आपने देखा आपके बाल भी उड़ना शुरू हो जाते हैं हवा में. So similarly, if you will go to the garden, you will see that once the wind is very humid, ठीक है, जब हवा बहुत तेज हो जाती है, once the wind is very rapid and when it is very harsh, so you might have seen that the petals of the flowers also goes into the wind. आपने देखा होगा जब कभी बहुत तेज हवा चलती है तो फ्लावर के पेटल्स भी हवा में यहाँ से वहां चले जाते हैं. All right. So this process of going or flying the flowers petals into the wing is known as your wind dispersal. All right. Now over here the definition of it is written as some plants, such as dandelion, have seeds that act as parachutes, which are carried away by the winds. अब यहाँ पर लिखा है कि कुछ plants ऐसे होते हैं, for example dandelion, ये dandelion flowers होते हैं, dandelion plants होते हैं, and the petal of these flowers acts as parachute. Now why they are comparing the petal of these flowers as parachute? Because parachute also flies in the wind. आपने देखा है ना कि parachute भी हवा में उड़ रहा होता है. The second name of parachute is air balloon, यानी कि air में move होने वाला balloon. If there would be no air, if there would be no wind, the parachute will not work. Parachute work नहीं करेगा. So similarly, they are, comparing the name of dandelion as parachute. ये लोग parachutes को dandelion flower से compare कर रहे हैं. ये dandelion flower को parachute से compare कर रहे हैं. क्यों compare कर रहे हैं? Because both have the same properties. दोनों एक जैसे काम करते हैं. Parachute भी हवा में उड़ता है और dandelion flower भी हमारा हवा में उड़ रहा है. इसकी भी petals हवा में उड़ती है. All right. And which are carried away by the winds. और इसके petals क्या होते हैं? हवा में यहाँ से वहां जाते हैं और फिर वहां पे दूसरे वाले plants उग जाते हैं. है ना? यही होता था ना कि जब भी seeds एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, explode होकर, तो वहां पे वही वाला plant grow कर जाता था. अब similarly क्या होगा? As the petal of these dandelion flowers moves in the wind and goes back into another place, over there the other dandelion flower grows. ठीक है? जब इसकी पेटल्स हवा से उड़ के दूसरी जगह जाके गिरती हैं तो फिर कुछ टाइम के बाद वहां पर जहाँ पे ये गिरी होती है ना इसकी पत्तियां, वहां के ऊपर दूसरा जो डेंडेलियन फ्लावर होता है वो ग्रो कर जाता है. सो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ विंड डिस्पर्सल, यानी कि डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स और डिस्पर्सल ऑफ द पेटल्स बाय winds. All right. Now
हाउ डज द एयर कैरीज इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब हवा इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर कैसे चली जाती है, अब हमें इस चीज को भी देखना है. अच्छा, पहले तो हम जरा यहाँ पर आके इसको देख लेते हैं दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्पर्सल बाय विंड्स. अब आप इसको पढ़ोगे, ठीक है. द अदर एग्जांपल व्हिच दे हैव गिवन विद डेंडेलिन इज द ऑर्किड प्लांट. ऑर्किड प्लांट की भी इन्होंने हमें एग्जांपल दी. ऑर्किड प्लांट की आपने नीचे पिक्चर देखी होगी डेंडेलिन की, ऑलराइट. So over here they have given us two examples of the dispersal by wind plants as dandelion and orchid. ठीक है. Now dispersal by winds, I am reading it out for you. Some seeds are carried to a new place by the wind. These seeds are very light. Now, as you must know that the seeds or the petals which are carried by wind from one place to another, these seeds or the petals must be very light in weight. यानी कि डेफिनेट सी बात है कि इनका जो वेट होता होगा वो बहुत हल्का होता होगा, बहुत लाइट होता होगा, तभी तो विंड से एक जगह दूसरी जगह जा रही है ना. अब जैसे हम लोग हैवी होते हैं तो विंड हम इंसानों को तो उठा के एक से दूसरी जगह नहीं फेंकती ना. ऐसा तो कभी नहीं होता ना दैट इफ इट इज टू विंडी तो हम भी एक जगह से दूसरी जगह गिर रहे हो, है ना. It never happens. It happens in cartoons, but never with humans, है ना. But as the clothes are sometimes very light, and as our hair are very light in weight, so our hair moves from one place to. हमारे बाल तो उड़ जाते हैं मगर हम नहीं उड़ते, है ना. तो जिस चीज का भी वेट बहुत लाइट होता है सिर्फ वो वाली चीजें उड़ती हैं हवा से, बाकी हैवी वेट की चीजें नहीं उड़ती. तो ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं, the seeds and petals are very light in weight, and because of that, because of the lightness of the weight, these are dispersed by wind. इनकी जो यानी कि पेटल्स होते हैं ना डेंडेलियन फ्लावर्स के, रॉकेट के, इनके पेटल्स बहुत लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, ताकि वो हवा से एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं. Now number 2 is the seeds of the orchid are almost as fine as dust. अब ये कह रहे हैं जो दूसरा वाला प्लांट है ऑर्किड प्लांट्स, इसके जो सीड्स होते हैं वो इतने फाइन होते हैं, इतने बारीक होते हैं जैसे डस्ट होती है. डू यू सी डस्ट? आप डस्ट बहुत ज्यादा देखते तो नहीं हो ना, यू ऑलवेज फील इट वंस इट इज देयर ऑन योर स्किन और इन योर हैंड, ठीक है, बट यू नेवर फील अ लॉट ऑफ डस्ट. ठीक है, डस्ट आर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स as compared to dust, and as dust the particles or the seeds of orchid plants are also very light. So this is the reason that they can also be dispersed by winds. Now 3 is many have hairy growths which act like parachutes and carry the seeds far away by the parent plant. The seeds of the dandelion are carried by the winds. Again, they are saying the same thing, that as the seeds and as the petals of these plants are extremely light, so they can be carried from one place to another by wind. All right. I hope it is clear to everyone. Now, the ways by which it can be traveled from one place to another. Again, the same thing. Let me zoom it out for you. Ways of traveling. Seeds dispersed by wind in many shapes and sizes. बहुत सारी तरह से चली जाती है. I'm reading it out for you. Dandelion has parachute-like seeds. ठीक है. The sycamore has the helicopter-like seeds. अब देखिए जो थर्ड वाली पिक्चर बनी हुई है, इन्होंने एक और हमें फ्लावर का बताया. Then peas have pods and explodes when they have dried out and touched by an animal caused by the seeds to fly out. अभी हमें different तरीके बता रहे हैं that how do it travels by winds, by animals and by explosion. इन्होंने हमें peas की example दी है that peas are dispersed by explosion. Dandelion is dispersed by wind, and the third one, the sycamore, it also dispersed by animal. Now how seeds can be dispersed by animals, we will going to do it in the next class. Till here, I hope that whatever I've explained to you regarding dispersal by wind is understandable to everyone. All right.